Hi guys, welcome to Study Buds. Today we are going to start with the chapter Chemical Reactions and Equations. So let's get started with first chapter of Science class 10th. Chemical Reactions and Equations. So first let us try to understand the name of the chapter Chemical Reactions. Now what do we understand by chemical reactions? By chemical reactions मतलब क्या? So when a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. मतलब जब भी chemical change होता है, कौन सा भी केमिकल चेंज, फॉर एग्जाम्पल फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. और जब भी केमिकल चेंज होता है वी सी दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. अब केमिकल रिएक्शंस तो समझ गया, केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या. So chemical equation, it is a shorthand representation of reactants and products in a chemical reaction. Now what do we understand by shorthand representation? Shorthand representation मतलब क्या होता है? For example, let's take example magnesium, Mg, right? तो मैंने मैग्नीशियम नहीं लिखा बट उसके जगह मैंने Mg लिखा प्लस ऑक्सीजन. मैंने ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखा बट आई हैड रिटन O2 instead of that. And this when combined it gives MgO, that is magnesium oxide. So instead of writing whole sentences that magnesium plus oxygen gives magnesium oxide, I directly written Mg plus O2 gives MgO. So it is what called as chemical equation, but this is not the balanced chemical equation, this is unbalanced chemical equation. So this is called as chemical equation. Chemical equation is a shorthand representation of reactants and products in a chemical reaction. Moving to the next, observational changes. Now observational changes means what? So observational changes are those, means change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. Means if any of this occurs, any of this, whether this or this, we can say that a chemical change has occurred. चेंज इन स्टेट मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से सॉलिड या फिर सॉलिड से गैस. सो दिस इज चेंज इन स्टेट. चेंज इन कलर मीन्स कलर में चेंज. इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स गैस उसमें से इवॉल्व हुई है. एंड चेंज इन टेम्परेचर मीन्स द चेंज इन टेम्परेचर, जो अगर कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है. अगर इन चेंजेस में से एक भी होता है देन वी कैन से दैट अ केमिकल चेंज हैड अकर्ड एंड अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. Now types of chemical reactions, so there are basically 5 types of chemical reactions: combination reaction, decomposition, displacement, double displacement, and reduction and oxidation reaction. Before this, let me explain you 2 important types of chemical reactions. The 2 important types of chemical reactions are exothermic. Now what do we understand by exothermic chemical reaction? तो जिसमें heat given out होती है, बाहर फेंकी जाती है, निकाली जाती है. A reaction in which heat is given out, it is called as exothermic. And endothermic मतलब क्या? So a reaction in which heat is absorbed, मतलब हम absorb करते हैं heat को, that reaction it is called as endothermic chemical reaction. ठीक है. Next, combination reaction, when 2 or more reactants combine to form a single product. मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और ये एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, Mg दैट इज मैग्नीशियम प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन. ये कंबाइन होके फॉर्म होगा MgO विच इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट है और ये 2 कंबाइन हो गया है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. Moving towards the second chemical reaction, that is decomposition reaction. When a single reactant break down to give simple products, it is called as decomposition reaction. अब combination का opposite है. Opposite क्या है? Decomposition reaction. अब इसमें A plus B AB था, अब इसमें AB जो है सिंगल रिएक्टेंट है, जब ये ब्रेक डाउन होता है टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स A plus B, it is called as decomposition reaction. बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इट नीड्स एनर्जी. उसे एक एनर्जी लगती है. दैट मीन्स कौन सा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए वी नीड सम टाइप ऑफ एनर्जी. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट.
So it is called as decomposition reaction. Means when a single reactant breaks down to give simpler products, it is called as decomposition reaction. There are three types of decomposition reaction. When energy is provided in the form of electricity, it is known as electrolytic decomposition reaction. When energy is provided in the form of light, it is called as photolytic decomposition reaction. And when energy is provided in the form of heat, it is called as thermal decomposition reaction. But remember that decomposition reaction always requires some form of energy to carry out. The next one is displacement reaction. Displacement reaction is a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution. It is called as displacement reaction. And for displacement reaction to understand, you need to understand the reactivity series and you need to learn this so that you can know the more reactive metal and the less reactive metal. Let us take for example Fe stands for iron and CuSO4, that is copper sulfate. Now when I put Fe, that is iron, in copper sulfate solution, what will happen? The products it will give will be Cu plus FeSO4. Now why had the copper from this sulfate from its salt solution has been replaced by iron? ऐसा क्यों हुआ भाई कि Fe ने Cu की जगह क्यों ले ली? So it is because Fe is more reactive than Cu. You can see it is placed higher than Cu. Therefore, it has displaced Cu, that is copper, from its salt solution. It is called as displacement reaction when a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. It is called as displacement reaction. The next one is double displacement reaction, a reaction in which two different atoms, or we can say a group of atoms, are exchanged and precipitate is formed. भाई अभी नया शब्द precipitate क्या आ गया? So what is precipitate? Precipitate is an insoluble substance or we can say salt formed during reaction. मतलब एक ऐसा substance जो soluble नहीं है, पानी में dissolve नहीं होता. It is formed during reaction only. It is called as precipitate. So ऐसा कौन सा reaction जिसमें different atoms और group of atoms exchange हो जाते हैं और precipitate form होता है, उसे double displacement reaction कहते हैं. For example, let's take example of NCERT only. This is the given example in NCERT. Na2SO4, that is sodium sulfate plus BaCl2 barium chloride gives BaSO4 barium sulfate plus 2NaCl, that is sodium chloride. अब ऐसा क्यों हुआ? See, Na had combined with Cl, right? And they had formed sodium chloride. While Ba had combined with SO4. This Ba had combined with SO4. पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के पास आया. तो यहाँ पे क्या हुआ? एटम्स आर एक्सचेंज्ड एंड वन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, राइट? एंड इन दिस रिएक्शन BaSO4 is the formed precipitate in this reaction, we can see. Moving to the last reaction, that is oxidation and reduction reaction. अब oxidation और reduction दोनों मिला के बनता है redox reaction. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? नाम से ही पता चला है ऑक्सी मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना. अब ऑक्सीजन ले आए और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो जाए. और इसमें डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मतलब नेगेटिव चार्ज इसमें डोनेट हो जाता है. वाइल इसी की कंप्लीटली अपोजिट बोल सकते हैं हम रिडक्शन है. रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ये डोनेट करते तो ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, ठीक है. अब जब इसे हीट किया हमने तो ये देंगे हमें Cu प्लस H2. अब यहाँ पे CuO ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. CuO का रिडक्शन हो रहा है टू Cu, राइट? इट इज बीइंग गेटिंग रिड्यूस्ड. ये हो गया आपका रिड्यूस सब्सटेंस. वेल H2 ये क्या? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये हो गया ऑक्सीडाइज और ये बन गया H2O. दिस इज द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और ये दोनों मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन. सो विद दिस वी हैड कंप्लीटेड ऑल द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस along with the examples. One most important question which comes from this topic is that the photolytic decomposition reaction which is carried out by giving the energy in the form of light
So this photolytic decomposition reaction means for example this silver bromide. So this and silver chloride also we are having example. So this above reactions they are using black and white photograph. This is the most important question which comes most of the year we can say. Now let us discuss some previous year question paper of 2024 important questions. So this question it is from PYQ of 2024. It is an MCQ. Assertion: decomposition reactions are generally endothermic reaction. Reason: decomposition of organic matter into compost is an exothermic process. You can comment the answer in the comment section. This is another board question, that is translate the following statements into chemical equations and then balance them. So we need to first translate this into chemical equations and then balance them. This topic is remaining. I am going to make another video on the topic balancing chemical reactions. You can comment your answer in the comment section. Thank you for watching this video, and if you like this, do not forget to like and subscribe it for more such amazing content. Thank you.